Assalamu alaikum. I start with the great name of Allah Pak, who is the most beneficent and the most merciful. Kindly recite Durud Pak. Today I will discuss here Newton's law of chapter number 5, force and motion. Newton's first law of motion. Every object continues its state or rest or uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external force which changes its state of rest or of uniform motion. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मोशन मीन अगर मूवमेंट हो रही है या रेस्ट में हो, ऑब्जेक्ट अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन शो कर रही हो और उसी स्टेट में रहे तब तक जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ कार। अगर आप कार को स्टार्ट करते हैं तो वो तब तक मूवमेंट कंडीशन में रहेगी जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ब्रेक। अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो फिर वो कार रुक जाती है। Another example, a small coin is put on a card and placed over a glass. When the card is flicked away with the finger, the coins drop into the glass. Newton's first law of motion is also called law of inertia. So, inertia क्या है? ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करती है चेंजेस को अपनी स्टेट से चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बस सडनली स्टार्ट मूविंग, the passenger standing in the bus will fall in the backward direction. It is due to the reason that the lower part of the passengers, which is in contact with the floor of the bus, is carried forward by the motion of the bus, but the upper part of the body remains at rest due to inertia, and so the passengers fall in backward direction. All the material object possesses the property of opposing any change in their state of rest or of uniform motion. This property of matter, by virtue of which an Thanks to object Allah resists on a learning change something new. in Stay its safe, stay state home, of love your parents. rest Allah or Hafiz. motion is called inertia. So, Newton's first law of motion